Why WhatsApp has sued the Indian government? Is it because company prefers users' privacy, their freedom of speech, their freedom of expression, or they just don't want to comply with the new IT guidelines issued by Ministry of Information and Broadcasting? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, उससे पहले ये जान लो कि मैं कौन हूँ। Hi, my name is Akash Nagi. I'm an actor, writer, engineer, a content creator, a fitness enthusiast, and I welcome you all to this channel. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक चीज ऑब्जर्व की कि गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो कि सोशल मीडिया पर हो रहे एब्यूजिव एंड वायलेंट कंटेंट को टारगेट करें और उसे एलिमिनेट कर सकें। इसी के चलते 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5, ऑल्ट बालाजी और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर लाया गया। देन 25 फरवरी 2021 को ये गाइडलाइंस इशू हुई। Information Technology Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code Rules 2021। ये गाइडलाइंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए है। Under these guidelines, every social media platform is termed as an intermediary, which is a link between one person with another on the internet। अगर एक पर्सन को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरे पर्सन से कनेक्ट करता है तो उस प्लेटफॉर्म को एक इंटरमीडिएटरी कहेंगे। इन गाइडलाइंस के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दो पार्ट्स में बांटा गया। जिन प्लेटफॉर्म्स पर 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं उन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी कहा गया एंड जिन प्लेटफॉर्म्स पर 50 लाख से कम रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उन्हें सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज का दर्जा दिया गया। ड्यू डिलिजेंस हैज टू बी फॉलोड। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक इम्यूनिटी मिलती है अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट, जिसके थ्रू कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता अगर उनके प्लेटफॉर्म पर कोई वायलेंट या फिर कोई अब्यूजिव कंटेंट अवेलेबल है। बट नाउ इफ दे डू नॉट फॉलो द एक्शन ऑफ रिमूविंग दैट कंटेंट फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म, देन दिस सेफ हार्बर प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू देम। Grievance readdressal mechanism. Under this clause, every social media intermediary will have to appoint a grievance officer. This grievance officer will have to acknowledge the complaint done by any person who is directly or indirectly related with that abusive or violent content, or anyone who has filed a complaint on that person's behalf. This grievance officer will have to acknowledge the complaint within 24 hours. Grievance officer will have to disable the access to that photo or video on their platform which is abusive or violent in nature. Specific guidelines for significant social media intermediaries. Under this, every significant social media intermediary will have to appoint a chief compliance officer, a nodal person who will coordinate with the law enforcement agency, and a resident grievance officer. All three have to be residents of India. This mandatory physical presence in India will have a significant implication for foreign players in terms of deployment of resources, setting up infrastructure and taxation. The big platforms will have to publish a compliance report with the detail of complaint filed and the action taken on those complaints. Identification of first originator of any information. This is the clause on the basis of which WhatsApp has filed a case against Indian government. इस क्लॉज के हिसाब से अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंटेंट का फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी कि उस कंटेंट को जिसने सबसे पहली बार उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया उसके बारे में डिटेल्स जान सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट व्हाट्सएप पर किसी भी कंटेंट X का फर्स्ट ओरिजिनेटर जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप को अपने सभी कंज्यूमर्स, अपने सभी यूजर्स के डेटा से गो थ्रू होना पड़ेगा, तभी वो उन यूजर्स को फिल्टर कर पाएंगे जिन्होंने कंटेंट X का सर्कुलेशन किया है। After filtering out those users who have circulated the content X, then and only then WhatsApp will able to give the name of the first originator of that content X. As we all know, WhatsApp, Telegram, Signal, these applications work on end-to-end encryption basis. यानी कि अगर कोई A person किसी B person को कोई मैसेज भेजता है और B person उस A person का रिप्लाई करता है तो कोई भी C person उनके मैसेज नहीं देख सकता। बट इस क्लॉज के हिसाब से अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी यूजर का कोई भी कंटेंट देख सकती है। इसके लिए WhatsApp जैसी कंपनीज को हर एक यूजर का डेटा रखना होगा। To fulfill this clause, every significant social media intermediary will have to keep a keen eye on the users and their data on their platforms. This is not the first time any government has asked WhatsApp to do this kind of stuff.
In 2019, government of US, UK, Australia, New Zealand, they have told tech companies to design a mechanism in their encrypted products whereby governments acting with appropriate legal authorities can access the data in a readable and a usable format. And this is nothing in comparison what Brazilian law enforcement has told WhatsApp to do. They want WhatsApp to provide suspects' IP address, geolocation data, customer information, and the physical messages itself. OTT platforms will have to self-classify their content on the basis of age, which is universal, UA 7+, UA 13+, UA 16+, and A content, which can be only viewed by adult audience. They have to enable a parental lock so as to access content which is UA 13+. They have also been told to design a reliable age verification method. For every movie, every series, every documentary on OTT platforms, they have to specify the classification of that content in the description itself. Appoint a grievance officer who will resolve any complaint within 15 days of the complaint filed. Self-regulatory body, which has to be headed by a retired Supreme Court or a High Court judge. Oversight mechanism. Ministry of Information and Broadcasting itself is going to formulate an interdepartmental committee for hearing grievances. The content which is abusive and violent in nature is going to be removed in 24 hours. Increasing transparency by publishing a compliance report. Adding a label to the content for users to know the content is sponsored, owned, or advertised. These guidelines undermine the free speech. Traceability issue. In recent times, India has faced many data leaks online. For example, data leakage of Big Basket, data leakage of Domino's, data leakage of Air India, data leakage of Upstocks, and they are counterproductive in the absence of data privacy law. So who do you think is right? WhatsApp filing the case against Indian government, or Indian government releasing these guidelines for removal of violent and abusive content from social media sites? Tell me in the comment section, like the video, share the video, subscribe the channel.